बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। Hoy día soy cocinamos pollo tikka con papa। आज हम चिकन टिक्का पटाटो बना रहे हैं। ¿Qué ponemos condimentos? So explicamos. Primero tiene pollo, papa, vinagre, aceite, condimentos. Tiene que ponemos condimentos. Ese también explicamos todo. Condimentos, 1 cucharas. Curry, ají peruanos seca, molido cilantros, parsley, sal, comino molidos, limón, harina de garbanzo, yogur, ajo, jengibre molidos con licuado y dentro ponemos agua। अब हम उर्दू में बताएंगे। आलू, चिकन, बेसन, हल्दी, मिर्च लाल, धनिया पाउडर, मेथी, खुश्क मेथी, नमक, जीरा पाउडर फॉर्म में, लेमन, दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट पानी में मिक्स किया हुआ है, सिरका, ऑयल, चिकन लेग पीस और आलू उबले हुए 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आलू को उबालना है। pollo con pierna, 1 cuarto de pollos, papa 2 minutos soy cocinados, no más। अब मैरिनेशन करेंगे लहसुन अदरक के पानी के साथ। Ahorita marinación con mixto con agua de jengibre, otro ajo molidos con licuados con agua. Mixto ponemos ponemos 1 cuchara de vinagre, 1 चम्मच सिरके का डाला, ponemos poquito sal, medio cuchara, आधा चम्मच नमक का डाला, ahorita mixto con todo condimentos con ajo, jengibre con vinagras, todo. Mixto muy bien. Después esperamos 2 horas. Después barbecue. मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। Sacamos y dentro de agua con ajo, jengibre, como sacamos como después de 1 hora। इसको 1 घंटे बाद अदरक और लहसुन के पानी में से निकाल लिया।
अब हम मैरिनेशन करते हैं। ponemos es yogur, दही, कुरी, हल्दी, ají peruano, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, cilantro molidos, pepas, comino, जीरा पिसा हुआ, पार्सली, मेथी खुश्क, मेथी खुश्क जो है रोस्ट की हुई है, हरीना दे garbanzo, बेसन भुना हुआ है, harina de garbanzo tostado sin aceite, fritamos, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ajo, jengibre molido, ponemos una cuchara, ¿Os te gusta poquito poner zafrán? No tiene, no problema. अगर आपको ज़र्दा कलर अच्छा लगे तो थोड़ा सा ज़र्दा कलर डाल लें। Ponemos poquito aceite, como 2 cucharas, 2 चम्मच ऑयल के डालें। करता फिर इसको अच्छे तरीके से मसाला लगाएं। Ponemos condimento con mixto, con muy bien mixtar, poner arriba de pechuga, carne, ponemos ahorita ahí dentro papa, आलू डालें, हस्बे ज़ायका नमक डाला, ponemos sal con cantidad usted gusta que comer, después de mixto muy bien, ponemos en refrigerador mínimo 6 horas। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको 6 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रखा। मिक्स करने के बाद 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें मिनिमम।